हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो हम देख रहे हैं अल्ट्रा मॉडर्न इंडियन सिटी। ये क्या लिखा है? हाईटेक सिटी हैदराबाद। अरे वाह, चलो देखते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। और दूसरे दो चैनल्स उनको भी सब्सक्राइब कर लेना, लिंक्स है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। उन चैनल्स में भी आपके रिक्वेस्टेड वीडियोस आ रहे हैं। होटल Good morning and welcome back to Hyderabad. Today we are going to show you something a little bit different. We've explored the old city, some of the tourist sites, tried possibly the best biryani in the world. But today we're going to show you the modern side of Hyderabad, one of the most modern cities in all of India. In fact, we're actually staying in the business district, which is like one of the biggest business hubs in not only India, in all of South Asia. We're actually staying at the Sheraton Hotel, and this is what you can get for around £100 a night. I'm drinking a coffee next to the pool, and for some reason none of the Indian tourists in Hyderabad like to go swimming. This is needed. We have just had an absolutely humongous breakfast. There was slightly too much to choose from and it becomes kind of overwhelming because you don't know whether to have all curries or eggs and hash browns, but we tried a little bit of everything, so I do need to get in and swim. Today we're going to basically just check out the financial district, the business district, and also High Tech City. Now High Tech City was opened back in '98 and it was basically created for people to be able to go to work and live in the same location. Like, I think back then that would have been a really new and unique concept. And also here there is the tallest building in South India. I don't know where that is. It's kind of crazy. After the last couple of days exploring, you would not think we're in the same city. You're just surrounded by sky-rise buildings, and it just looks completely different. खाली है, एक बंदा नहीं है पूल में। शेराटन काफी खाली है। That is definitely the best way to start any day, a coffee and a swim. But we are now out in the business district of Hyderabad, and this is like nothing we have seen so far in our time in India. It's just full of greenery, these huge big roads with hardly any traffic and just full of sky rises, apartments, businesses, and apparently in the city they started a scheme, so the walk to work scheme. So anyone that works for any of the big businesses or the big hotels, they made the streets very accessible so you can walk, hence no traffic. ट्रैफिक भी ना के बराबर ही है। This is crazy. I've never seen so few cars, so few people in India for such a built-up area. It almost feels like a ghost town. But again, behind me, there's huge banks. Of course, you're going to find some street food. This is crazy. It really is. I mean, this feels like a ghost town, doesn't it? Compared to like what other Indian cities have felt like. This is so calm. It's like Bangkok with no people. शायद कूड़ा है, नहीं होना चाहिए यार। इतना सुंदर कर दो इंडिया को। ये ऑटो कितना सुंदर है। 500? 500? Are yaar. It's like 2 miles away. 100. 100. It's 2 miles away and there's no traffic. Yeah, High Tech City. It's just down here. It's okay. I'll go with someone else then. No, this is crazy price. Come on, This is Puggle price. 300, madam. How much? 300. 300. No, it's okay. No worries. Thank you. Dhanyavad. That's crazy. ऐसा होना नहीं। 500 to go 2 miles. जो रेट है उस हिसाब से करो।
that is empty. It is literally a 5-minute drive to where we want to go in High ये Tech City. देखा फॉरेनर है तो And कुछ he's भी asking मांग for ले। 500 rupees. हाँ फिर पुलिस आके अरेस्ट कर सकती है इसे हाँ, for- करना चाहिए वैसे कॉल करना चाहिए ऐसे का जो नहीं करना गलत था That really हाँ, ये बड़ा annoys सुंदर me. है। On Uber, it's only 100. देखा How can you Uber charge 100? 5 times वही तो। more? I don't mind a little bit. I don't mind a little bit more, but not 5 times more. नहीं ठीक होना चाहिए Hello, my sub. Thank you, Danyabad. 7210. 7210. इससे क्या होगा डालेगा That is one और thing I also really like about Uber out और here. पैसे You भी have to सीधे verify चलेंगे। your trip with your PIN, so you Yeah. always know you have the right driver. Ciao to High Tech City. चलो तो आए थे। सुंदर लग रहा है यहाँ पे देखिए व्हाइट और ग्रीन बनाए हुए हैं वहाँ का दिल्ली में कितना येलो और ब्लैक होता है ना It's a शायद business district, and there is nobody at all. Literally one other bike on the road. पूछो भैया इनसे कौन से भाई है भाई कितना सुंदर लग रहा है लुक एट द बिल्डिंग अरे वाह ये कौन सी जगह है And welcome to High तो Tech लग City. रहा है- I don't know exactly ये क्या है whereabouts in High Tech City we are. We got the rickshaw to the metro station so we could then just explore the entirety of the area. But on the way in, you start seeing all the tech companies, Amazon, Microsoft. And look at this. As you walk up, कैलोरी है ये कुछ वाला भैया ये चलती रहूंगी मैं पतला होना है मुझे it tells you how many calories you've ये burnt. अच्छा है इससे Someone हिम्मत took the बनती है कि escalator. पतले हो रहे हैं सीढ़ियाँ चढ़ते हुए IKEA ओह वाह हाँ हैदराबाद में है ना IKEA मेरे ख्याल से हैदराबाद में ही है और कहीं नहीं है शायद इंडिया में है आगे है क्या और भी Take you through some of the buildings, and actually behind me you might be able to see the massive IKEA. It's supposedly one of the best things to do. I'm not going to इसके बाद आगे IKEA. क्या I बोलते don't हैं even पता like IKEA. Do you know what? Do we have one IKEA in the I've UK? never been. I have never been to It would be IKEA. good fun, but I'm not doing starting. it. सुंदर लग रहा है वाह ये भी कितना अच्छा बनाया This is very different. दिस इज सो नाइस Like Molly said, we are walking कितना along अच्छा बनाया शेड the टाइप Sky Bridge, going past all sorts of businesses. NTT Data, Amdar, Satvar. I have absolutely no idea what any of them are. But if I showed you this, if I walked through here and I showed you that view, पेड़ भी कितने ग्रीनरी भी बहुत है you'd probably say Singapore, बहुत सुंदर Tokyo. करेक्ट I don't know. सिंगापुर की लुक आ रही है Definitely not Hyderabad. सिंगापुर की लुक देखा गुड अरे वाह ये भी बड़ा अच्छा एरिया है अरे वाह सो कुछ बोल रहे थे नो फोटोग्राफी और समथिंग हैं बोलते हैं होंगे लोग हाँ बोल रहा हूँ मेरे को प्रॉब्लम Genuinely? होती है I'm very, very impressed. This skywalk goes on forever, connecting all the different businesses, all the different malls, बड़ा all अच्छा the different डिजाइन भी bars. बनाया Being है the- साइड के it's जो the tech रेलिंग hub, टाइप है वो भी बड़ी the सुंदर business है कमाल hub. का पहली बार देखा A lot of the workers कनेक्ट किया हुआ है after कहाँ से work, कहाँ के maybe they want a पूरा beer, एक बिल्डिंग से maybe a दूसरी cocktail, maybe some food, maybe a luxury mall. I don't know. I don't know बहुत अच्छा what the Indian बहुत ही tech अच्छा है। workers like to do after work, but they've definitely built a lot of bars and Yeah, restaurants very for good. them. ये अपना नया इंडिया बना ओए होए ये भी बड़ा सुंदर लगा वेरी गुड मुझे तो पेड़ भी देख के इम्प्रेस्ड हो रही हूँ मैं तो इतना ही ग्रीन अरे वाह ये भी बड़ा सुंदर है Massive, fancy, new, big buildings, but then there is a lot of things that are slightly unfinished, and you can see all of the बन work रहा है अभी बहुत अच्छा बन रहा है walking to सुंदर their next construction job. But yeah, like this road that we're walking on right now is like Bangalore से better लग unfinished रहा and a little bit dusty. You can see, like to the left, Chalo. building, new building. In You've front, gone to Bangalore ना new buildings. I It's mean, like यहाँ a पर contract. गया I feel तब- for these तब था guys ये because सब it is बन रहा था unbearably hot. उससे होता सैटरडे संडे को Look ऐसा at होता है these. अरे वाह Make my home bouger. I think you already have. They're ridiculous. These are some of the high-end apartments that you can find in high-tech city. I've been interested to know how much they cost. How much like a करोड़ों में 1-2 bedroom होंगे भाई। apartment in a place like this is, because you're just surrounded by like बहुत महंगा। IMAX cinemas. वो नोएडा का था कहाँ पे था जो मैं देखा था आपका T-Works, IMAX सिनेमा कहाँ These look ridiculous. Wow. आईमैक्स सिनेमा अरे वाह बिल्डिंग तो देखो But we are not going to the Bouja apartments because सुंदर obviously एरिया है we're not यहाँ Bouja. रहने में भी बोले मजा पूजा है For apartments them. है। We are heading to the Red Rhino, but behind me I think is the main tech street.
वाह Microsoft, सुंदर लग रहा है। Synergy, and I think there, this building here might be where we're looking. Probably the fanciest ऐसा brewery you'll फूल भी see. है झाड़ियों में आए तो और भी सुंदर लगा फूलों से तो। So there I you go. missed this. There are all the Yeah, tech yeah, companies, ये क्या है? and this is us. Oh, yeah, the look, Red red Actually, an Rhino. office building Red as Rhino well, क्या but है? just at the खाने की bottom of जगह it that opens at lunchtime. They have a Red Rhino, which is like a brewery. Oh, They so obviously खाने की open it जगह। for the The office workers to get drunk at lunchtime. ओ खाने का है। For two, it's okay. Thank you. Then you've had. पूरा वैसी ही सिस्टम है जो यहाँ पे होता है, बस बाहर खड़े हुए हैं और वहाँ से अंदर So से। this is Red Rhino. This is where the tech company workers hang out at lunch और टेक्निकल or यहाँ after पे work, and it is extremely expensive. I don't know if that's the case for the whole of High Tech City. That's much more expensive than not just the rest of Hyderabad, but the rest of India so far. So I've been recommended the Black Pearl Robust Stout, and for 500ml, it's 425 rupees. So it's nearly double what you'll pay anywhere else. And even a bottle of water in here. It's very hot. It's really hydrating. 150 rupees. 150 का पानी। Daniel, oh, these look good. They look really good. Thank you very much. So this is the Okay. stout. Yes, sir. Stout. क्या? Thank you very much. And all of the drinks, their drinks are made here. Yes, sir. In the brewery. Our drinks are made here. Amazing. And when did you first open? We are open. It's been a year, sir. 1 year. Ah, amazing. Thank you very much. Daniel. Wow, look at this. Cheers, Cheers. to the Red Rhino Stout and American Lager. Oh, it's delicious. It's really, really good. Acha, thank you. No wonder it was expensive. ये This पानी is ये 150 का था। fanciest looking water. मुझे लगा वो जैसे Never mind. बिस्लरी टाइप की काफी बोतल अच्छा देखने में अच्छा है। स्टाइल Focus. बनाया। So let's try the Black Pearl Stout. क्या होता है ये? ब्लैक पता नहीं आगे बोला। Oh, he was right when he said it's a little bit bitter. बिटर है। 6.5%. और खाओ। So it's going to be a bit pokey, but like the gentleman said, this place has been open a year, and I feel like that's going to be the case with a lot of things in High Tech City. Obviously, it started back in the early 90s, but every year, new businesses, new tech companies, पीछे का तो new देखो malls, बिल्डिंग्स के साथ कितना new सुंदर craft beer लग रहा bars. है। बहुत ही अच्छी एरिया। Cheers. अमेजिंग, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया है। ये तो पूरा मतलब कमाल हो रहा है, कमाल हो रहा है। जो इन्होंने दिखाया था वो तो मेरे ख्याल से जो हम देखते हैं नोएडा वगैरह गुड़गांव उससे भी आगे हाँ, नजर है। ये तो उससे लुकिंग आगे लाइक लग रहा अल्टीमेट। ये तो बहुत ही सुंदर था जिस तरह से सब बनाया हुआ है। क्योंकि इन्होंने ज्यादा लंबे एरिया में अच्छा किया हुआ है, ना कि छोटे पॉकेट्स नहीं है। और जो वॉक वो चलने वाला बना रखा था वो तो walking बहुत वाला, ही सुंदर वो था। तो बहुत ही बढ़िया था। मैं तो उसी को देख के बहुत ही बढ़िया। आई थिंक दे आर गोइंग हैदराबाद जो हो सकता है बहुत ही। बेंगलोर से भी तेजी आगे बढ़ रहा हो। बताओ भैया, बैंगलोर से ज्यादा तेजी से लग बढ़ रहा रहा है क्या? Looks इस like वीडियो से तो यही लग रहा है। बिल्कुल। और मैं तो देख रही, तो मैं कह रही थी यहाँ रहने में कितना मजा आएगा। Yes. कितना अच्छा एरिया है Very यार, nice. बहुत ही सुंदर है बिल्कुल। यहाँ रहना। वाह, बताओ कौन रखता है? आप में से कोई रखता है या Very सोच रहा nice. रहने बहुत का? अच्छा लगा, बहुत अच्छा बहुत दिखाया था, सुंदर very एरिया nicely है, shown. यहाँ पे रहने में मजा आएगा भैया, नो डाउट। लिविंग बहुत हाई हो ब्यूटीफुल गया बन रही है। India मेरे ख्याल standard 10 साल में दे विल कन्वर्ट द होल सिटी पूरी सिटी हो जाएगी बिल्कुल लाइक दिस। यार दिल्ली को भी कर दो प्लीज। कितना सुंदर था यार, कमाल हो गया। अमेजिंग, अमेजिंग। आंखें फटी की पटी रह गई मेरी। तो चलो फ्रेंड्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।